Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss again the mathematical review, some of the basic concepts about the pharmacokinetics. So let's begin with the first slide. Uh, According to the pharmacokinetics, which simply means that this is the movement of the drug inside the body. जब हम pharmacokinetics को define करते हैं, this is the movement of drug inside the body, and it is comprised of a ADME process, which means absorption, distribution, metabolism, and the elimination. So the pharmacokinetics uses the math, and as a pharmacokinetic student and the biopharmaceutics student, the student should know about some of the basic concepts related to math that are involved in pharmacokinetics, so that there is ease to measure the drug dosage regimen, and the blood concentration over the time. क्योंकि जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, दैट इज़ द ड्रग डोज एंड द डोजेज रेजिमन, के ड्रग की डोज कितनी होनी चाहिए, डोजेज इंटरवल कितना होना चाहिए, एंड वी मेजर द ब्लड कंसंट्रेशन. सो द बेसिक्स ऑफ द मैथ a student should know when he or she is studying the pharmacokinetics. So pharmacokinetics के अंदर हम ज़्यादातर जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, these are the word problem, जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, स्टेटमेंट्स हमारी ज़्यादातर होती है, and these statements they are basically converted into mathematical form. तो इसलिए इसकी जो कन्वर्जन है फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम टू द मैथमेटिकल फॉर्म, स्टूडेंट शुड नो कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को इन द मैथमेटिक्स की जो फॉर्म है, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है. एंड इफ a student is able to convert the word problem to mathematical form, he or she is basically dealing with the clinical situation where the equations they are basically uh, are involved and calculations they are involved. तो जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम और मैथ को वो करते हैं, तो वी आर बेसिकली डीलिंग विद द क्लिनिकल सिचुएशन, एंड दिस इज हेल्पफुल टू डिटरमिन अगेन द डोजेज रेजिमेंट. हमें डोज को हेल्प आउट करता है कि हमारी डोज कितनी होनी चाहिए, डोज का शेड्यूल कितना होना चाहिए, एंड वट विल बी द ड्रग कंसनट्रेशन इनसाइड द ब्लड ओवर द टाइम, कि ब्लड के अंदर ड्रग की कंसनट्रेशन कितनी होगी. So altogether, the math, the basics of the math, they are important when you are studying the pharmacokinetics. The units are important. You should be able to have some kind of knowledge about the units. आपके पास जो इंटरनेशनल सिस्टम है, मीट्रिक सिस्टम है, the student should know about the metric system, volume क्या है, and the milligram क्या है, how the milligram it is converted into microgram, and so many conversion जो हम लास्ट लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं. ओके, मूविंग टू द हायरार्की ऑफ द अलजेब्रिक ऑपरेशंस. जब हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं, तो these are the some of the basic things, but as a reminder, the student should know that the first of all, when we are basically dealing with the algebraic expression, we should know कि सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस को डील करना है, जो इन द स्मॉल ब्रैकेट्स में होती हैं, जो ब्रैकेट्स में होती हैं इंफॉर्मेशन, जो यूनिट्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, दे आर बेसिकली डेल्ट फर्स्ट हम उसको डील करते हैं पेरेंथेसिस को. देन वी डील विद द एक्स वो नंशिएशंस को हम डील करते हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उसको डील करते हैं. देन वी डील विद द multiplication or the division, and finally we deal with the addition and subtraction. तो ये हमारा जो लेवल ऑफ पेरियोरिटी है, कि हम स्टार्ट करते हैं पेरेंथेसिस से, गोइंग टू द exponents, and then multiplication or division, and finally the addition. So here are some of the example where you will see कि कैसे the parentheses they are involved. यहाँ पे आप देखें कि k1 plus k2 into a, अगर हम ऐसे करते हैं कि a को जस्ट k2 से मल्टीप्लाई करें और k1 से मल्टीप्लाई ना करें, सो द आंसर विल बी रॉन्ग. सो द पॉइंट इज़ कि सबसे पहले आप k1 और k2 जो पेरेंथेसिस के अंदर है, दिस शुड बी सॉल्व फर्स्ट, एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद a. Suppose the value of k is k1 is equal to 2 and k2 is equal to 3. तो सबसे पहले आपने इनको अपने प्लस करना है. ऐसे नहीं है कि 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड लिविंग
behind the 2 और 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई ना करें, so the answer will be different, आपका different answer आएगा. Like in this case अगर 4 से 3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 and then plus it with the 2, the answer will be 14. अगर आप इसको एग्जैक्ट जो रूल है पेरेंथेसिस का, अगर आप 2 को 3 के साथ प्लस करते हैं, द आंसर इज 5 एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद द 4, द आंसर इज 20. तो आप देखेंगे एक साइड पे 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, एंड देन अदर साइड देयर इज 20. So there is huge difference. This is not the way the calculations they are done. So the main objective is when you are doing the calculation, the first the parentheses they are dealt with, तो उसको सबसे पहले डील किया जाता है. And when you are dealing with the parentheses, the innermost parentheses they are basically dealt first. जब आप उसको डील करते हैं तो सबसे पहले इनर मोस्ट जो पेरेंथेसिस होते हैं उनको आप रिजॉल्व करते हैं. लाइक इन दिस केस ये दूसरी जो एग्जांपल है 3 और 2 ये इनर मोस्ट parentheses. There are many parentheses, but I would say कि 3 and 2 जो है they are the innermost. First we resolve this 3, multiply 3 with 2, the answer will be 6, and then plus it with the 5, the answer will be 11, and then multiply it with the you can say the 222, and then multiply it with the 10, so answer will be 220. So the main point is कि जब parentheses, many parentheses they are involved, the innermost parentheses should be dealt first and going outward. जब आप इसको दूसरी parentheses जो outward हैं उनको आप बाद में deal करते हैं. So the next point is the exponentiation. जब आप exponent को वो deal करते हैं तो exponent जो आपस में multiply होते हैं, like in this case e raised to power -2 multiplied by 3. So आप 3 को पहले इससे multiply करेंगे, exponent को पहले deal करेंगे, and then you will solve the problem. ऐसे नहीं है कि आप इसको और इसको पहले आपस में solve कर लें और फिर multiply कर रहा हूँ तो answer will be wrong. So this will be equal to 2 raised to power -6. ये 6 के इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.5. जब आप 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर इज 1.5. एंड फाइनली यू विल हैव, इसकी आप जो वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, तो आपके पास आंसर ये वाला आता है 0.00248, और इस केस में आपके पास आंसर आता है 0.2231 जब इसकी रेज टू पावर 1.5 होता है. और ई की जो वैल्यू है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू, तो आप वैल्यू पुट करेंगे और उसकी एक्सपोनेंट को आप रिजॉल्व करेंगे, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई विद द 5 और देन यू विल रिजॉल्व विद द -6 और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द आंसर, आपको प्रॉपर आंसर. तो सो द पॉइंट इज कि जब आप इसको डील करते हैं द एक्सपोनेंट they are first deal with and then they are multiplied whatever is the number. Okay, so next after dealing with the parenthesis exponentiation, then the multiplication and the division. आप multiplication को involve करते हैं या division को करते हैं, so they have the priority, especially the जो भी है the point is कि आप division की तरफ आप जाते हैं या multiplication, so mostly the division is done first and then going to the multiplication. Anyway, जहाँ पे there is multiplication तो आप multiplication करते हैं, and then you go for the you can say the addition or the subtraction. आप addition करते हैं या subtraction करते हैं. So there is a way where you basically decide what is the order, कि किस order से आप अपने जब kinetics को deal कर रहे होते हैं. The first is the parenthesis, next is the exponentiation, then is multiplication or the division, and finally addition and the subtraction. They are basically involved. ओके, हियर आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स. यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम के, वो आपको यू शुड नो दोज प्रिंसिपल. सो सपोज दिस इज n रेज टू पावर a एंड रेज टू पावर b. अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपका बेस सेम हो, लाइक इन दिस केस जहाँ पे n इज सेम, इस केस में भी n सेम है लेकिन जो पावर्स हैं दे आर डिफरेंट, तो इन दैट सिचुएशन the base remains the same. यहाँ पे देखिए base is 1, it is same, and the powers they are basically added up. यहाँ पे add up हम करते हैं. Like in this example 10 raised to power 1 and 10 raised to power 2, if they are multiplied, the answer will be कि आप 10 को एक one time आप इसको mention करेंगे and the power will be basically added up. तो 1 को आप 2 से add up करते हैं, the answer is 10 raised to power 3, that is equal to 1000. और अगर ये जो जिनका सेम बेस होता है, अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं
सो देयर विल बी माइनस साइन, सो आप इसको माइनस करेंगे, वट एवर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, जो इसकी पावर है जो डिवाइड हो रही है उससे माइनस हो जाती है. लाइक इन दिस केस द n is the same base and here is a and b, so b will be in minus, आप इसको माइनस करते हैं. एग्जाम्पल इज 10 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर 2, और 2 जो है दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी डिवाइडेड, द बेस इज सेम 10 and 10 and this is the 2, so this is the denominator. अब ऊपर जब जाएगा it will be basically in the minus form and the answer will be 10 raised to power 2, आपके पास 2 आता है. So you basically what you do is this, you do the subtraction of the 4 with the minus with the 2, इसको 2 के साथ वो करते हैं, डिनोमिनेटर है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. Okay, when there is a small parenthesis between the powers, you basically multiply it. अगर ये power parenthesis ना हो, then you there is no need for multiplication. You basically apply the exponential rule, उसके ऊपर apply करते हैं. But if there is parenthesis, you multiply it. So a then parenthesis and b, so you multiply a with the b, like in this example 3 and 2, so it will be 6, not 3 raised to power 2, not 10 raised to power 9. ये 10 raised to power 9 इसको करना, this is wrong, लेकिन ये पेरेंथेसिस है, सो इट विल बी 6. अगर ये ऐसे होता है, सपोज कि 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 पावर 2, so it the answer will be 10 raised to power 9, 3 multiplied by 3. So in this case there is parenthesis, so it should be multiplied. Okay, so another rule is कि जब डिनोमिनेटर में कोई पावर होती है, when it is in the nominator form, आप इसको क्या करते हैं कि उसका साइन जो है प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक इन दिस एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 2, द आंसर विल बी 10 रेज टू पावर -2, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है एंड इन नोमिनेटर में जब आएगा 10 रेज टू पावर -2 आएगा, द पावर बिकम -2. ओके, सो इफ द स्क्वायर रूट की कोई वैल्यू है, इट इज अगेन कन्वर्टेड टू 1 ओवर दैट वैल्यू. सो हियर n स्क्वायर रूट ऑफ a, सो n 1 ओवर a, उसका जो ये जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली इट इज इन द एक्सपोनेंट फॉर्म में आती है, बट इन द इसकी जो पावर होती है दैट बिकम डिवाइडेड, जिस तरह 1 ओवर a हो गया. लाइक इन दिस एग्जांपल n 1 ओवर 2 हो जाएगा. अगर कोई वैल्यू नहीं है तो स्क्वायर रूट के लिए वैल्यू जो है 1/2 है. इफ देयर इज एनी वैल्यू, so that value basically it is translated, like in this example it is the 3, so the answer will be n raised to power 1 over 3 आ जाएगा. And here is the example 100 square root 100 raised to power 1 over 2, the answer will be 10, because 100 का जो पावर है that is equal to 10 raised to power 2 और ये 1 over 2 है, so answer will be 10. Like in this example the 10 raised to power 2 multiplied by 1 over 2, क्योंकि 100 को हम 10 raised to power 2 कर सकते हैं, multiplied by, so this multiplication 1 over 2, so answer will be equal to 10. Like in this example 1 over 3, this is the 1000 की जो वो वैल्यू है 10 raised to power 3 and this is 1 over 3, तो कैंसिल हो जाएंगे, the answer will be equal to 10. ओके, सो इन केस ऑफ लॉग, ये चीज़ें जो है ये बेसिकली जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, दीज आर बेसिकली द basic things that are basically dealt with, and this is the common log. ये हमारे लिए common log है, common log of a and b. If they are two values are multiplied, we can write it in separate form with the plus sign, like log a b, log of a plus log of b. Here in this case log of 1000, so it is equal to log of 10 plus log of 100. इसको देखें आप, ये अगर 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें आंसर विल बी 1000, लेकिन हम प्लस कर सकते हैं. एंड द log of 10 is equal to 1 and log of 100 is equal to 2, so 1 plus 2 is equal to 3, so ये 3 के इक्वल है. Okay, so the next example is log 1 over 1 divided by b, that is the denominator. जब denominator में हो तो माइनस साइन आता है, yes there is a minus sign, like here in this example आप देख सकते हैं कि ये जो है the it is in minus form, ये minus form में है. और अगर ये आपको और the example is like if the example is log of 1000 divided by 100, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log of 1000 minus log of 100, तो ये 3 minus 2 आ जाएगा, the answer will be equal to 1, that is equal to log of 10. ये log of 10 के इक्वल होता है. Okay, so this is again the power log of a b. जब पावर होती है तो बेसिकली ये
इट कम्स ऑन अदर साइड, सो ये पावर दूसरी साइड पे आ जाती है. दिस इज वेरी बेसिक रूल कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं, एंड log of 10 is equal to 1 multiplied by 2, that is the answer is equal to 2. Okay, so here you can see minus log of a over b. So you can see कि इसकी जो वैल्यू है, अगर आप इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, जो basically denominator है become nominator, and then the nominator is become denominator, तो denominator में convert हो जाता है because you converted the value of minus into plus form. Okay, like this one. यहाँ पे आप देखें तो माइनस लॉग ऑफ 10 ओवर दिस वन लॉग ऑफ, सो हमने इसकी वैल्यू खत्म कर दी है, तो द डिनोमिनेटर इट इज नाउ इक्वल टू 1000 एंड द 10 इट इज इन द डिनोमिनेटर फॉर्म. ये नोमिनेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, सो द आंसर विल बी 3 by 1. The answer will be log of 1000, you can say the log of 1000 divided by log of 10. So the answer will be equal to 3 divided by 1, so it will be answer, the answer will be equal to 3. आपका आंसर आएगा, not 2. So the answer will be equal to 3. Okay, so sorry, this the answer will be equal to 2. 2 हमारा आंसर आएगा because 10 इसके ऊपर आप वो करते हैं, डिवाइड करते हैं 100, and the log of 100 is equal to 2, so answer will be equal to 2. Okay, so the log of 10 raised to power a, जब a आता है तो the log of 10 is equal to 1, so the answer जो भी पावर होगी 10 की, the answer will be that one, that is the a. Like the log of 10 raised to power 3 अगर है तो आंसर विल बी इक्वल टू 3. अगर log of 10 raised to power 5 है तो आंसर विल बी इक्वल टू 5. तो जो पावर होती है 10 की, द आंसर इज दैट नंबर. Okay, and in case of natural log, whatever is the power, that is the value. So natural log of e raised to power 3, the answer is that number. So in case of common log, इसका जो base 10 होता है उसकी जो भी पावर है, that is the answer. और in case of common log, whatever is the power of 10, that will be the answer. In case of natural log, whatever is the power of e, that will be the answer. That is very simple rule. Okay, what is the relationship between common log and the natural log? Last time हमने इसको डिस्कस किया था कि natural log of any number is equal to the common log of any number is equal to natural log of that number divided by 2.303. तो ओवरऑल जो वैल्यू है उसको आप डिवाइड करते हैं to get the value less than less than the natural log. तो natural log की किसी नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉमन लॉग की उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज वी गेट द डिवीजन, हम डिवीजन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. लाइक इन दिस केस द log of 10 it is equal to natural log of 10 divided by 2.303 and answer is equal to 1. आपका यहाँ पे भी आंसर 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा. So any number which has got raised to power 0, the answer will be equal to 1. If 100 is there and the raised to power is equal to 0, you will get the 1 answer. If a is equal to 0, you will have the 1 answer. So you remember these things. These are very basic concepts. These will be used again and again in case of pharmacokinetics. And as a student, you should know what is meant by the log, what is meant by the power. So when we will be dealing with the compartmental model, when we will be dealing with the pharmacokinetics, these terms they will be used again and again. Okay, so another very important um, uh, concept related to the pharmacokinetics is the use of term that is called as the variable, other is called as the parameter, the third one that is called as constant. Variable is something that changes during the process, like the drug concentration changes, the time changes. So when you administer the drug, the time is changing, so that means the variable. Anything that is changing, that is called as variable. Parameter is that it is fixed was for the specific drug. Like one drug has got this kind of clearance, this kind of volume, the absorption rate constant. For other drug, the clearance will be different, volume of distribution will be different, and the absorption rate will be different. So the things are little bit different when you are dealing with this drug to drug. तो हर drug के लिए अपनी clearance है. So these are called as the parameters. Other is constant. The constant is a value that is universal one. It remains constant. Like in case of pi, the value is equal to 3.14. So it is a universal value. In case of e, the answer is e is equal to 2.718. So this is the universal value. That is called as constant. This is called as parameter. For the specific drug, it is constant. And this is a variable is something that changes with the time. So that is also the, you can say, the variable.
parameter and the constant. So the last thing is the units. जब हम use करते हैं, the units are very important for the students, and in our metric system we discuss these things in detail. If you want to have the very good knowledge about the metric system, about the units, about the volume, about the length, about the weight. So the basic is कि आप वो lecture दोबारा revise करें, and hopefully that lectures will be helpful for you. Okay, so moving to some of the very important units that are used in biopharmaceutics and the pharmaceutics. One is called as the volume. हम volume को बार बार use करेंगे. Mass it will be used, concentration it will be used, flow rate it will be used, and rate of elimination it will be used, time it will be used, reciprocal time for the constant it will be used, like elimination rate constant, and area under the curve, that is AUC, it will be again used. तो इसकी जो वो हैं units हैं, as a student you should know, but if you want to have very good knowledge, you want to have the grip, go to metric system. In our first lectures, maybe it's, the first 4 to 5 lectures, they are very important if you really want to have the knowledge about the volume, mass, concentration, and all these things. Okay, so the if you are dealing with the volume, this is measured in ml, it is measured in liters, it is measured in quarts, it's measured करते हैं for liter. The unit is capital L, or the small l can be used. In case of mass, gram, kilogram, pounds, they are used. For concentration, milligram per liter or gram per 100 ml, and weight in volume, mole per liter. So different units they are used. And for flow rate, ml per minute, or liter per hour, that is called as clearance, the volume of blood that is clear from the drug per unit time. So इसकी definition जो है, इसलिए इसका unit जो है liter per hour आता है, that is for clearance. और the flow rate का भी same unit है. Okay, rate of elimination milligram per hour, so that is the or microgram per minute, and time और मिनट सेकंड में यूज हो सकता है. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, दैट इज पर आवर और पर मिनट और पर सेकंड जो है, दैट इज द यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, आई मीन द टाइम इट बिकम डिवाइडेड. एरिया अंडर द कर्व का जो यूनिट है, माइक्रोग्राम पर एम एल, और it is not per hour, it is in hour. So that is we will discuss this in details when we will be dealing with the area under the curve. तो ये कुछ चीज़ें हैं the student should know when he or she is studying the basics of the pharmacokinetics. उनको units का पता होना चाहिए. Okay, so the next thing is that when you are basically adding up, when you are multiplying, retain the units. आपने इनके units जो है इनको retain करना है. Suppose कि if you want to add the milligram with the microgram, the unit should be the same. If you want to add 3 milligram with the 4 microgram and you say my answer is 7, so this is wrong because the unit is different. For this is milligram and this is microgram. The first thing is that retain the units and maintain the same units. आपने same unit उसके maintain करने हैं. अगर unit change हो जाएंगे, yeah, the answer will be wrong. So maintain the same unit, retain the units, and some of the cases में हमारे पास यूनिट नहीं होता, like in ratios में हमारे पास यूनिट नहीं होता. In case absolute bioavailability, like in this case, there is no unit. हम बस present करते हैं कि it is the bioavailability is 100%, or you can say 80% absolute bioavailability, whatever is the bioavailability. So it has no unit. So sometimes the ratio, like the absolute bioavailability, they have no ratio. But whenever the unit is involved, retain the unit, and if you are multiplying or dividing it, retain the same unit. इनका same unit होना चाहिए. ऐसे ना हो कि एक वैल्यू का एक यूनिट हो और दूसरी का दूसरा यूनिट हो, and you are basically adding up, so the answer will be definitely the wrong one. Okay, so if e raised to power kt, these are the units, तो ये unit भी आपस में cancel हो. This is per hour and this is r, तो ये आपस में cancel हो जाते हैं, and you will get the answer this one. तो ये भी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है. Whenever you are basically dealing with, retain the units, and you are multiplying the unit for the number. जब आप numbers को multiply करते हैं, like 1 को 2 से multiply करते हैं, और जो 1 का unit है that is पर सेंटीमीटर, और जो 2 का यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर, तो इनकी यूनिट आपने रिटेन रखने हैं. एंड द थर्ड नंबर इज 3 पर सेंटीमीटर, तो पर ये इसका यूनिट भी आपने रिटेन रखना है. सो इसकी रीज़न क्या है, इसकी एक्चुअल वो क्या है, so that these units can be multiplied or they can be cancelled with. तो यहाँ पे देखें पर है, so it will be divided, so
they are 3 सेंटीमीटर, 1, 2 and 3, so सेंटीमीटर स्क्वायर. लास्ट टाइम जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि सेंटी के ऊपर देर इज नो पावर, बट इट इज ऑन द जो हमारा बेसिक वो यूनिट होता है उसके ऊपर पावर आ जाती है. तो सेंटीमीटर स्क्वायर and this is in grams. So the answer will be 3 multiplied by 2, 6 gram per centimeter cube. ये आपका आंसर आ जाएगा. So with this, these are some of the basic things related to units, variables, and the hierarchy of the units के hierarchy of the algebraic expression, कैसे आप इन चीज़ों को deal करते हैं. Hopefully these basic things they will be helpful for the students who are studying the biopharmaceutics and the pharmacokinetics. If you have any question related to the basics of the math that will be involved in the biopharmaceutics and the pharmacokinetics, please feel free to ask the question. So with this, I will conclude my lecture. Like our channel, subscribe our channel, and if you have any question, again comment on the comment section. Thank you very much.